everybody. I welcome you to this morning class of economics. So, we were discussing various topics which are very important for upcoming examinations and mains point of view. So, in today's class, we will discuss many of the topics which are being asked by UPSC frequently and which made the headlines quite a few years back. So recently we saw twin balance sheet problem in India before COVID also and after COVID also it persists. So what is this kind of problem? Let us see in detail. So twin balance sheet problem is a situation of the mismatch between companies and banks. When there are banks which are having challenges in maintaining the balance sheet. What is balance sheet actually? When you go to any bank or any office, you will see the Excel sheets like this, which there is time, date, employees, borrowers, liabilities. So balance sheet mainly comprises of assets and liabilities, and due to any kind of borrower or lenders which are not fulfilling the demand of the bank or the companies, there is asset liability mismatch. तो जब यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी के बीच में मिसमैच हो जाता है एंड दैट लीड्स टू द बैलेंस शीट प्रॉब्लम. नाउ व्हाट इज ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम? Twin balance sheet problem was seen in the news because of the companies which were facing the balance sheet issues due to non-performing assets. Those assets which were taken by the companies or loans which are not being full after 90 days called as NPAs. तो NPA को भी हम डिटेल में समझेंगे. And what are the banks? So banks that have the twin balance sheet challenge are facing the loan issue mostly. So the loans which are lagging behind the banks after taken by the Kingfisher Airlines, Sahara, and many more companies were not able to get recovered. So due to lagging of such recovery issue, these two issues keep on continuing and there was a twin balance sheet situation. Now let us see some of the important features in the twin balance sheet situation. So it is a challenge which deals with the balance sheet of Indian companies and the Indian banks. So it is banks and the companies both facing the similar challenges. So what is the objective? There is loan, money to the corporates or interest. Issues arises of return from the project are inadequate and it raises the cost of debt to the counter ratio. Debt to earlier we saw debt to the asset ratio which was declining, and the payment delays more than the 90 days of the duration that leads to also decline in the NPA problem. Then we saw the corporate balance sheet issue also. And what is that in corporate sector? Which objectify the building projects such as lending for the multinational project development, cities development, infrastructure development, build, making of MSMEs companies. So these all things build the project and earn and pay back bad loans. So if the company is not able to repay the bad loans, that leads to the corporate issue. And there is again balance sheet syndrome. You could have seen in the economic survey of government of India a legal document that provides that the situation of the balance sheet was quite declining and loan payment become quite difficult. So it cost the debt becomes high, the return were lowered. So higher cost of debt would lead to higher return, but it says that if there is higher cost of return, there are lower charges which might exacerbate the payment issues. Now there is crisis in the payment scenario also, and its condition leads to corporate balance sheet
mismatch. So there are two types of assets. So there is over leveraged companies having too many of debts and not able to repay it for a period of time more than 90 days, or having 9% of total banking system which was a part of NPA, and it has a 12.1% of public sector banks. So NPAs were mostly congested and accumulated in the PSU banks, even that is State Bank of India, Punjab National Bank, and many such government banks were also facing the similar debt trap issue, and that leads to creation of balance sheet problem. Now let us see some of the diagrams which explains the twin balance sheet issue. There is a Vijay Mallya, person who was a main defaulter. So economy flows through a cyclical period. There is a boom, recession, borrowing, lending. So there is demand, there is supply. But when there is a defaulter takes its money from the market and surges the borrowing. When borrowing surges, Indra Nooyi, the bank manager of SBI, gives loan to the person so that its industry should survive because it is providing employment to many people. And with that money, this person is enjoying his life, is making use in useless issues. Therefore, we saw the GFC, gross fiscal capital, and the policy paralysis was also came into force, that NPA were not able to get recovered, although there was SARFAESI Act of 2002, but people somehow were not able to recover the loans, and there's fall in the demand that leads to NPA and twin balance sheet situation. So non-performing assets generated, and there is twin balance sheet situation which also prevail. So debt service problem is found, and after that the advisor Arvind Subramaniam is saying that after Russia, India is the second largest NPA holder. India has second largest non-performing assets comparison to the other BRICS countries. What are BRICS countries, friends? BRICS is an intergovernmental association of various nations comprised of Brazil, Russia, India, China, South Africa. These are five countries having BRICS countries, and they somehow provide lending, they provide loaning, they provide borrowings, and many other facilities to the Asian and Southeast Asian nations. Thus, NPA piled up and rises through the BRICS nation, in which India was the second highest after Russia. Now let us see the NPA situation. That what is an NPA? Any asset or any principal interest which is remain overdue for a period of greater than 90 days. 90 डेज के पीरियड से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो पा रहा है, रिकवर नहीं हो पा रहा है, देन इट टर्न्स आउट टू बी अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर द बैंक as well as the corporates. The bank are required to classify NPA into substandard, doubtful, and the loss assets. So let us see what is substandard assets. Assets which have remained non-performing for a period of less than or equal to 12 months, यानी कि एक साल तक, in a period of 1 year and 12 months, if an asset or interest is not being recovered, then it turn out to be a substandard asset. Then comes the doubtful asset, when the asset category remains substandard for more than 12 months. अब 12 महीने के ऊपर भी ये एसेट जो है डाउटफुल ही रह गया, यू आर नॉट एबल टू get the money out of it or interest out of the asset, then it becomes a doubtful. Okay, it can be getting the loss, let us recover it. Then banks will say, let us implement the another section, that when it gets the loss asset is considered uncollectively and of such little value, it continues as a bankable asset,
is not warranted, although there may be some salvage or recovery value. So this leads to the loss of asset which was needed to be recovered during the period of 12 months, and when it becomes loss asset that leads to non performing asset, यानी कि अब ये कोई इंटरेस्ट बैंक को नहीं लौटाएगा, या तो अब इसको बैंक नीलाम करे और टेक अनदर लीगल मेजर्स। सो अब लीगल मेजर्स की बात करते हैं तो बैंक अब चले जाएंगे कोर्ट के पास। जज साहब, लेट अस हैव सम मनी, लेट अस हैव सम फंड्स रिकवर्ड सो दैट वी कैन कैरी आउट आवर फंक्शन। जज साहब क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑर्डर, there is SARFAESI Act with me, and with that act I am providing you the other facilities to recover your NPA. Now NPA could have been recovered if it has been implemented with that power, but there is civil court, and civil court में आप जानते हैं मैटर्स 10-10 साल तक चले जा रहे हैं, and it is very slow and रिवर्ट process. तो तारीख पे तारीख चलती जा रही है, NPA बढ़े जा रहे हैं, debt ridden loans and bad loans leads to decline of entire economic system. Now let us see some provisions which are stringent in nature, still they are facing the challenges. SARFAESI Act क्या दे रहा है आपको? SARFAESI Act is giving the legislation that helps financial institution to ensure asset quality in multiple ways. अब जो एसेट्स नॉन परफॉर्मिंग हो रहे हैं या उनका लॉस होते हुए दिख रहा है, उनको इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़ें दे रहे हैं SARFAESI? This means that the act was framed to address the problem of NPA, non-performing assets, bad assets through different processes and mechanism. What it gives? Different processes, अलग प्रकार की प्रोसेस और सिस्टम दे रहा है जिससे कि bad loans can get recovered. So SARFAESI Act gives the detailed provision for the formation and activities of assets, securities and the companies which needed to be reconstructed or which needed to be recovered. तो लॉस होने से बचाने के लिए जो एसेट्स हैं उनको SARFAESI एक्ट क्या करता है? एसेट्स की सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज बनाता है। थ्रू दिस एक्ट देर आर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज फॉर्म, एक नई कंपनी सरकार बनाती है टू गेट रिकवर्ड दोज एसेट्स विच आर बीइंग लॉस्ट थ्रू द लोन्स एंड डेट्स ऑफ द बैंक्स. सो व्हाट दिस asset recovery companies do, this takes all the activities to the auditing of all the financial data, all the balance sheets of the companies making loss, and it somehow provides the capital requirement as well as funding to get recovered by these bad loans. And if it does not get recovered, then it is a loss asset. So RBI has the regulation for this institution. Under the guidelines, these institutions are operating successfully, but there are many more challenges beyond that. So how SARFAESI Act work? अब कानून तो बना दिया, बैंक चले गए सरकार के पास, सरकार ने भेजा ये कानून मैं आपको दे रहा हूँ. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट यू विल बी एबल टू फेच योर मनी बैक, बट समहाउ द बैंक्स आर नॉट एबल टू गेट इट. व्हाई? लेट अस सी. अब ये आपका बैंक है, सपोज आपने आपके फ्रेंड ने मिलके 400 करोड़ लगाया, एक स्मॉल बैंक डाल दिया. बैंक पे आ गए रिश्तेदार, लोन चाहिए, आपने दे दिया 100 करोड़ का लोन, लो भाई कंपनी खोलो, गांव के लोगों को रोजगार दो, नाम कमाओ. रोजगार मिल गया, कंपनी चल रही है, फैक्ट्रियां लग गई. अब लॉकडाउन आ गया जी, ओ माय गॉड, सारी कंपनियां बंद हो गई, सभी लोग कोरोना से डर गए, छोटी मोटी बीमारियां बड़ी भयावह हो गई. नाउ यू सी द बैंक as well as the RBI is paralyzing because the companies are not working. तो कहाँ से प्रॉफिट बनेगी और कहाँ से रिकवर करेंगे? Now SARFAESI Act goes with certain conditions that when the loan becomes dysfunctional and it creates a bad loan or NPA, then asset reconstruction companies which are engaged in the reconstructing the asset or to recover the bad loans, they face challenge.
तो सरकार ने क्या किया, एजाइल फ्रेमवर्क लागू किया। लॉकडाउन में हमने देखा था एजाइल फ्रेमवर्क, वाटरफॉल फ्रेमवर्क, ये सारे सिस्टम को अपनाया। स्टिल वी सॉ दैट borrowers were not able to provide the loan back to the banks because the entire loan was failed. Company were closed for 2 years in the lockdown, and therefore no loans were able to get cleared. We saw in Noida around 2000 companies get closed. In overall India around 5000 companies get closed, and therefore the declining in the policies of the debts was keep constant. So there is again another tribunal which government formed, that is debt recovery ट्रिब्यूनल DRT एंड DRAT, दो प्रकार के ट्रिब्यूनल बैंक बना रही है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी एपीलेट ट्रिब्यूनल। एपीलेट ट्रिब्यूनल में देर सिंपली द बैंक विल गो एंड अपील दैट देर इज अ loan by this person, loan by this companies, they are not able to pay it back, what should I do? So the tribunal will give its instruction. Tribunal is direct a form of court. तो ट्रिब्यूनल को पूरी जुडिशियल पावर है कि वो कोई भी एक्शन ले सकता है। देन इट विल कम टू द borrower who will have to pay it by any cost. तो उसके ऊपर कंडीशंस लगाए जाएंगे, उनके एसेट्स मूवेबल और इमूवेबल, उनके व्हीकल्स, मकान, उनके गोल्ड, ज्वेलरीज, फैमिली प्रॉपर्टी, उन सबको स्लोली स्लोली बैंक अपने खोपचे में लेगा ताकि उनसे पैसे निकल सकें। दैट नीड्स रिकवरी ऑफ दिस एसेट्स फ्रॉम द बोरोवर। तो ये प्रोसीजर चलता है सारफाइसी एक्ट के थ्रू। स्टिल वी सॉ देयर वाज लैक ऑफ transfer of NPA to the asset reconstruction companies. An act enforces the security interest without court's intervention. It provides the power to the banks and financial institutions to take over the immovable property that is hypothecated or charged in force recovered by the debt। यानी कि जो मकान है उसकी कुर्की जब्ती हो जाएगी, है ना। आप फिर जाएंगे वकील साहब के पास, साहब साहब बचा लो, बोलेंगे बेटा आपने लोन लिया आपने चुकाया नहीं। तो बैंक को सरफाइसी एक्ट के अंदर पावर है टू गेट इट मनी बैक थ्रू द सेलिंग और मॉर्गेजिंग योर इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बैंक आपकी संपत्ति बेच देगा। नाउ लेट अस सी द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। क्या आ गया फिर, जो लोग लोन पे नहीं कर पा रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट पीपल। और वो क्या दिखाते हैं अपने आप को, हम बैंक करप्ट हो गए जी, बैंक करप्सी दिखाते हैं, और वो अपने ऊपर लीगल एक्शन से बचाव कर लेते हैं। सो लॉ इज़ वेरी लूसिड and very fragile in India, very flexible, where any kind of defaulter is getting out of its problem with using such kind of acts. Therefore comes the Insolvency and Bankruptcy Code Bill of 2016, one of the revolutionary bill, which thinks and which makes the procedure to chalk out the things which were making the non-performing assets in India. So Insolvency and Bankruptcy Code 2016 considered is one of the biggest insolvency reform in the history of India. It provides the organization of insolvency and bankruptcy resolution. There are corporate persons, partners हो गए, corporate people हो गए, individual हो गए, which work in time bound manner for maximizing the value of assets. The code creates time-bound process for insolvency resolution companies and individuals. So this process will be completed within 180 days. अब कैसे ये काम करता है कोड? So there is non-performing assets created by the companies who have taken the loans. अब लोन ये कंपनियां ले रही हैं, they are not able to pay the NPA, and now the insolvency and bankruptcy code applied. It will is the stressed assets को क्या करेगा, ये रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रेस्ड एसेट्स विल बी प्रोवाइडेड सम हेल्प एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, LLPs एंड द कॉरपोरेशंस। ये चार चीज़ों पे एप्लीकेबल है, किस पे, जो इंडिविजुअल हैं जिनकी अपनी खुद की कंपनी है, एंड द पर्सन हु आर
having the LLPs companies, the people who are having corporations, and authority to decide the insolvency and application without 180 days, 90 days और एक्सटेंशन स्लोड. तो 180 डेज में उनको कंपाइल किया जाता है कि वो अपने लोन्स को पे बैक करें. देन द फास्ट ट्रैक प्रोसीजर फॉर 90 days is available with the court tribunals which are provided through the Insolvency and Bankruptcy Board of India. अब क्या बनाया जा रहा है? There is a board which will be constituted under the Insolvency Bankruptcy Act कि कोई भी अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है and anyone who is not able to pay his loan back, then he will face the same situation. So there is NCLT, National Company Law Tribunal, which will provide its guideline to get the debt recovered. So debt recovered के लिए दो चीज़ें हो गई, एक NCLT गाइडलाइन होगी और एक IBBI होगी. इन दो चीज़ों से ये काम करेगा. थोड़ा सा डिटेल में इस माइंड मैप के थ्रू हम समझते हैं. नाउ आई ब्रिंग आउट दिस माइंड मैप फॉर यू टू मेमोराइज इट, मेक नोट इन योर कॉपी. सो व्हाट इज प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी? प्री एडमिशन अंडर सेक्शन 54A. तो इस एक्ट का कानून के अंतर्गत 54A सेक्शन बता रहा है कि कौन सी कंपनियां माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में आ रही हैं. इनका टर्न ऑन रेशियो 10 lakhs के अराउंड है and they are eligible to pay the tax under section 29A. 29A के अंतर्गत टैक्स पेने के लिए लायक है. Then there are PRIPs, Programmable Insolvency Professional Resolutions, from financial creditors 66% of वैल्यू जिनके पास बची है जिस कंपनी के पास. Then there is proposal of resolvency professional unrelated to the financial corporations or companies. Then there is special resolution. There is declaration by the majority of directors, form P6. P6 को याद रखेंगे, 29A को याद रखेंगे, and base resolution plan. These are the mechanism to resolve the insolvency. And there is a consent of financial creditors of 66% value for filing the application. Now what we see that our debt has been taken. अब वो 90 दिन के अंदर नहीं चुकाया गया. It becomes non-performing asset which is applicable to program resolution process. Then admission by the AA criteria which leads to termination of the process. इनके मिडिल में क्या है? When there is admission of AA criteria, it is fulfilled, then commencement of PRIP day 1, moratorium is provided, appointment of resolvency professionals, public announcement of initiation is also made. अब इसके थ्रू क्या हो रहा है? T1 + 2 days यानी कि 90 दिन के 2 दिन और बाद क्या कर सकते हैं बैंक? They take collateral debt and that should submit to RP a list of claims, and it provide preliminary IM and the base resolution plan also. It provide the T+7 days constitution of company of creditors by the resolute professionals and first meeting of COC. The submission of IM is also done. Then after 2 days there is public announcement form 9. फॉर्म 9 के अंतर्गत पब्लिक अनाउंसमेंट किया जाता है थ्रू न्यूज़पेपर और थ्रू एनी पब्लिक मीडिया दैट ये लोग जो है इंसॉल्वेंट है, बैंकरप्ट है, ये लोन पे नहीं कर पा रहे हैं. नाउ देयर प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड और मॉर्टराइज्ड. नाउ थर्ड डे पे क्या हो रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूज. जितने भी प्रॉपर्टी हैं उनकी वैल्यू कितनी हो रही है उनको रजिस्टर किया गया. नाउ आफ्टर 14 days meeting is taken back with the COC and submission of IM report to COC, then consideration of base resolution plan by the committee of creditors. अब base resolution plan बनाया जाता है कि कैसे इसको रिकवर किया जा सके. I hope you are getting these things. Moving on, we said the adjudicating authority. Now adjudicating authority will be the tribunal
और द कोर्ट, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अब हाई कोर्ट के पास ये मुकदमे नहीं जाएंगे, लोन वाली चीज़ें हैं ये आप हमारे पास लेके आओगे एंड वी विल टेक इट टू कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। तो अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं, जो बैड लोन्स क्रिएट हो चुके हैं, जो सामने दिख रहे हैं कि अब ये तो भाई वेस्ट लोन हो गया, अब इस पे नॉन परफॉर्मिंग एसेट फॉर्म हो गया, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, देन दिस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स आएंगे। दिस आर द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट बैंक्स एंड कॉरपोरेशंस टू रिकवर द लोन्स, इनको क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। अब इनका प्रोफेशनल काम ही है कि जाके डिफ़ॉल्ट्स को उजागर करना थ्रू इंडिविजुअल और कॉरपोरेशंस को। अगर कॉरपोरेशंस का डिफ़ॉल्ट है तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाएगा, अगर कंपनी का फॉल्ट है और वो लोन नहीं पे कर पा रही है देन इट विल गो टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। देन इट शुड बी रिकवर्ड आफ्टर 45 डेज। अगर 45 दिन में रिकवर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाएगा। सो देर इज़ नो हाई कोर्ट प्रोविजन अंडर दिस सिचुएशन। सेकंड केस में देखते हैं कि जब प्राइसेस, जब लोन्स इंडिविजुअल के सर पे हैं, व्हेन द इंडिविजुअल इज द पर्सन टेकिंग द लोन्स, देन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल will file the complaint at the tribunal, debt recovery tribunal. Then at second point he will again file the complaint at debt recovery appellate tribunal, and at the appellate tribunal there will be hearing चलेगी, तारीख पे तारीख बनेगी, but it will not cross the 45 days, and after the 60 days it will go to the Supreme Court of India, and there should be either recovery or there should be punitive actions. तो आपके वकील भी आपको बचा नहीं पाएंगे और आपको लोन चुकाना ही है और you have to go to the jail. Then let us see how National Company Law Appellate Tribunal works. थोड़ा सा Appellate Tribunal की डिटेल्स हम देखते हैं. So National Company Law Appellate Tribunal is set under the Insolvency Bankruptcy Code of India, and it has the problem of solving non-performing assets by taking the companies which are defaulters such as Kingfisher Airline. Okay, so National Company Law Tribunal क्या करेगी, 45 डेज का मार्जिन लेके फाइल करेगी एपिलेट ट्रिब्यूनल में. एपिलेट ट्रिब्यूनल एक ऐसी सेमी कोर्ट होगी या क्वासी कोर्ट होगी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, वेयर यू कैन फाइल योर केसेस टू गेट रिकवरी ऑफ द लोन्स, जहाँ पे 60 डेज के अंतर्गत लोन्स रिकवर होने का प्रोसीजर है. इफ डू नॉट गेट रिकवर्ड देन इट विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सो देयर इज अ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल फॉर इंडिविजुअल्स एंड देयर इज इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विच रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. जैसे कि लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इन द सिमिलर वे देयर विल बी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, and insolvency professionals will act together with the insolvent units, and it has the amendment in the IBC Act of 2019. अब कुछ संशोधन भी किए गए हैं 2019 ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में. इसे हम देखते हैं that insolvents should must finish within 330 days of their loss, and there are financial creditors they may have appointed with the representation of committee of creditors on their behalf. So there is ring fencing problem. What is that ring fence challenge? There is throwing of ring in which the risk of criminal proceeding will also be taken against the defaulters. तो डिफ़ॉल्टर्स के मन में ये डर होगा कि अगर ये मामला हम ट्रिब्यूनल में नहीं रिजॉल्व करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजिंग हो जाएगी हमारे ऊपर, क्योंकि पहले तो सिविल कोर्ट में जाता था मामला. नाउ देयर इज अ ट्रिब्यूनल इटसेल्फ इट इज एक्टिंग एज अ प्यूनिटिव डिफॉल्टर. अब वो क्रिमिनल एक्शन में उनको लिया जाएगा एंड दे विल टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ आई बिलीव दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस पार्ट. थोड़ा सा और हम कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे.
Now let us see the 8 tribunals which were merged under the National Company Law Appellate Tribunal एंड डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी और एनसीएलटी के माध्यम से इन 8 ट्रिब्यूनल्स और इन 8 एक्ट्स को जो पहले से चले आ रहे थे, यानी कि द सिनेमेटोग्राफी एक्ट्स ऑफ 1952 विच लुक एट द फिल्म सर्टिफिकेशन एफिलिएट ट्रिब्यूनल। तो फिल्म बनाने में बहुत सारे पैसे लोन लेते हैं प्रोड्यूसर। द प्रोड्यूसर्स टेक दिस मनी टू मेक द मूवी आफ्टर सर्टेन पीरियड, फॉर एग्जांपल 2 years। तो उसके बाद वो इस मनी को रिकवर करते हैं एंड दे रीपे टू द बैंक। बट आप देखते हो फिल्में फ्लॉप हो गई, प्रोड्यूसर का पैसा डूब गया, बट प्रोड्यूसर का नहीं, दैट मनी इज संक बाय द बैंक। जो बैंक लोन दिए थे प्रोड्यूसर को, उनका पैसा डूब जाता था एंड दैट इश्यूज गोज टू द हाई कोर्ट ऑफ द रिलीवेंट स्टेट। तो अब क्या हो गई, अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होगी कि अगर वो रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका मुकदमा अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा। देन कम्स द सेकेंड एक्ट, द ट्रेड मार्क्स एक्ट, जिसमें आपको ट्रेड मार्क दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अ कंपनी, जो डिस्टिंग्विश करता था अंडर सर्टेन पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिनेरियो को। तो ट्रेड मार्क्स गिव द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। अब ये भी किस में मर्ज हो गया, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में मर्ज कर दिया गया है। देन कम्स द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 in which the appellate property and the appellate board is merged into NCLT, which was the commercial division of High Court of Delhi, High Court of Allahabad and High Court of Patna। तो ऐसे जो हाई कोर्ट्स के कॉमर्शियल डिविजन्स थे, अब उनको दे दिया गया लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को, कि जो अब ये मामले बच रहे हैं टैक्स वाले और कस्टम्स एक्ट वाले, दैट विल बी आल्सो गिवन टू द लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। देन द कस्टम्स एक्ट ऑफ 1962, कौन सा कानून, कस्टम और एक्साइज कानून, जो देखते हैं आईआरएस ऑफिसर। सो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो एंड इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, यू हैव टू नो दिस एक्ट्स, कैसे इन कानून का उपयोग करके कोई ऑफिसर एक्शन लेता है। तो प्यूनिटिव मीन्स, तो कस्टम एंड एक्साइज एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल भी काम कर रही थी, जिसके मैटर अगेन हाई कोर्ट में जा रहे थे। बट अब क्या किया गया, एनसीएलटी रादर देखेगी कस्टम्स इश्यूज को जो एयरपोर्ट में पकड़े गए, है ना, कोई हीरे सोने की महंगी आइटम्स ले आया विदाउट पेइंग द टैक्स, तो ऐसी चीज़ें कस्टम्स के थ्रू पकड़ी जाती हैं। एंड नाउ इट इज़ अगेंस्ट द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। Then comes the Patent Act of 1970, which provide IPR, intellectual property rights, under the Intellectual Property Appellate Board, which is goes to the High Court of any state and which fails to run over the scenario and goes to NCLT। अब जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी किताब है, आपकी कोई शायरी है, आपकी कविताएं हैं, आपकी कहानियां हैं, जो व्यक्तिगत रूप से आपके टैलेंट से प्रकट हुई हैं, दिस थिंग आर कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो उसके लिए पहले क्या था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड, अब क्या बन गया, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। देन कम्स द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1994, जिसमें कि एयरपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल एक्ट कर रही है किसी भी प्रॉब्लम्स को, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोज कर रही है प्रॉपर्टीज़ को, एयरपोर्ट प्रीमाइसेस को, जो कि अनऑथराइज्ड छोड़ दिए गए हैं, है ना, अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, जहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट हो गया। आप देखते हो एयरपोर्ट के आसपास की काफ़ी ज़मीनें खाली पड़ी रहती हैं, फॉर व्हाट, फॉर सम मिलिट्री ऑपरेशंस, फॉर सम एयरफोर्स ऑपरेशंस। तो एयरफोर्स की वो ज़मीन क्या होती है, बहुत सारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, दुकानें डाल देते हैं, फिर कहते हैं नहीं जी हमारे गांव है ये, हमारे पूर्वज रहते थे तो हम यहाँ पे घर बना के रहेंगे। सो सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोजेस these properties on airport premises left by unauthorized occupants। ये मैटर भी पहले जा रहा था हाई कोर्ट ऑफ द रिलेवेंट स्टेट, नाउ इट विल गो टू द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जो सिविलियंट का जो केस होंगे
कि एयरपोर्ट की ज़मीन हमारी है, वो भी अब मैटर एनसीएलटी देखेगी, हाई कोर्ट नहीं देखेगी। देन कम्स द सेंट्रल नेशनल हाईवे अथॉरिटी लैंड एंड ट्रैफिक एक्ट ऑफ 2012। सो नेशनल हाईवे अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया गया, दैट वाज अ सिविल कोर्ट, लुक्स इनटू द मैटर्स ऑफ हाईवे इश्यूज विद द विलेजर्स। कि हाईवे बनाने के लिए हाईवे के आसपास की 50 मीटर की ज़मीन कैप्चर करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट विद कौन से लिस्ट, 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा लिस्ट? कंकरेंट लिस्ट। ओके, तो वो ज़मीन भी जो डाउटफुल हो जाती थी, दैट विल अगेन रिजॉल्व इन द एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, है ना। ऑल्दो नेशनल हाईवे ट्रिब्यूनल था पहले से, बट उससे भी अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो देन इट विल गो टू एनसीएलटी। देन लास्ट, द जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999 का कानून क्या कहता है? जो भी चीज़ें आप किसी लोकेलिटी में प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे कि शाही लीची मुजफ्फरपुर में हो रही है, मखाना है, तो जो ऐसी प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें जो किसी खास जोग्राफिकल ही लोकेशन प्रोड्यूस होंगी, पैदा होंगी, क्योंकि वो मिट्टी उसी जगह के लिए बनी है। तो उस पर भी क्या कर रहे थे अमेरिका वाले, हैविंग पेटेंट विद हल्दी, अमेरिका इज हैविंग पेटेंट विद बासमती, एंड दैट रेज अ ग्लोबल इशू विद द कंसर्न ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रेट। तो क्या हो रहा था? द मैटर गोज टू हाई कोर्ट अगेन। Now again there is a middle agency NCLT, National Company Law Appellate Tribunal, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड के मैटर्स को भी रिजॉल्व करेगी, एंड अगर नहीं हो रहा है देन गोस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। समझ गए? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईबीसी हैज की डेवलपमेंट। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 1 अक्टूबर 2016 को फोर्स में आ गया है। We saw many kind of laws being framed under the Insolvency Bankruptcy Board of India with the corporate insolvency process and regulation, creation of resolution plan, creation of insolvency professionals, and creation of resolution applicants, committee of creditors बन रहे थे। So these all things led to continuation of resolution of the defaulters। अब हम क्या देखते हैं? When we see there is a defaulter, कोई लोन ले लिया है, चुका नहीं पा रहा है, that person become a defaulter, that is appointment of the insolvency professionals। insolvency professional को हम अपॉइंट करते हैं। then there is moratorium period of 180 to 270 days, 180 से 270 दिन का हम उसे एक इंटरमीडिएट पीरियड देते हैं कि आप इतने दिन में अपने जो लोन है इसको चुका लो और हमसे जो है निश्चिंत हो जाओ। बट द क्रेडिट कमिटी बिकम्स एक्शनेबल व्हेन द लोन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर 270 डेज। तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या करती है? अब लीगल एक्शन हो गए। अब ये मैटर कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल में चला गया, हाई कोर्ट में नहीं, नॉट टू हाई कोर्ट ऑफ इंडिया और एनी हाई कोर्ट, इट विल गो टू द ट्रिब्यूनल। तो ये क्या करेंगे? लिक्विडेट करेंगे। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स इसको लिक्विडेट कर देंगे, एसेट्स को बेचेंगे, कुछ सोचेंगे कि उनसे कुछ मनी रिकवर हो जाए। देन देयर इज 75% ऑफ क्रेडिटर्स विच आर अप्रूव्ड। अगर ये अप्रूव्ड हो रहा है तो ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा प्लान का, आईबीसी कोड के अंतर्गत रिकवरी हो जाएगी। अगर नहीं हो पाएगा देन इट गोज टू द लिक्विडेटर्स, ये बेच दिया जाएगा। ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईबीबीआई? आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इट एक्ट्स फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ एनपीएज। इट एक्ट्स थ्रू मैकेनिज्म क्या है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स बना दिए गए, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज बना दी जाती हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और लीगल ऑफिसेज होते हैं, वैसे ऑफिसेज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ को मीट करे एंड टू राइट द ट्रांजैक्शन, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंट रिजोल्यूशन, कॉर्पोरेट लिक्विडेशन, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड इंडिविजुअल बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन।
So it is a key pillar of the ecosystem responsible for the implementation of code. ये सारे जो हैं की पिलर हैं जिसके द्वारा जो लोड है वो रिकवर किया जा सके, and it leads to reorganization of insolvency professionals and insolvency resolution process, after which the corporate process and partnership goes to completion. So this done for the maximum time bound period of 270 days. So 180 days से 270 days के बीच ये रिकवर हो जाना चाहिए, और it will go to the Supreme Court of India and it will become a criminal act over the industry. So asset reconstruction company क्या करती हैं? Is providing the institutions that advise the debtors of the bank at mutually agreed value and attempt to recover the debts or the association of security itself. सिक्योरिटी को निकालने के लिए एसोसिएशंस करते हैं. So I believe this topic is completed so far. Now let us see some of the questions which have been asked in previous years by UPSC. संघ लोक सेवा आयोग कौन से प्रश्न पूछ रही है इन टॉपिक से? हाउ एन एसेट बिकम्स एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कब बन जाएगा वो? एक्सप्लेन द आईबीसी प्रोसेस. हु इज an insolvent professional, and what is the National Company Law Appellate Tribunal, and what is Debt Recovery Tribunal? Or DRT. So let us solve a question and see that how it goes. So अगर ये क्वेश्चन एक आता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एक्सप्लेन, सो आप इंट्रोडक्शन डालोगे कि ड्यू टू राइजिंग एनपीए चैलेंजेस एंड लूप होल्स इन implementation of the existing laws such as SARFAESI Act. Then we saw the presence of a new organization which aims to counter the non-performing assets under the Insolvency Bankruptcy Act. तो ये क्या बन गई? Insolvency Bankruptcy Board of India. ये क्या करेगी? एनपीए को रिजॉल्व करेगी थ्रू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स. कितने दिन में? 180 to 270 डेज में. इसके अंदर क्या बन गए? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और क्या बन गए? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल. इंडिविजुअल्स को डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में डाला जाएगा अगर उनकी कंपनी फ्रॉडलेंट है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, लोन नहीं निकाल पा रही है, then it is goes to DRT. NCLT में कब जाएगा? जब कंपनी become a defaulter and is not able to pay the loan. Now आप इसमें सब डायमेंशन ऐड करोगे. What kind of defaulters are there? NPAs, प्रोसीडिंग्स क्या ली जाएंगी, सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या करेंगे. देन यू विल कंक्लूड इट with futuristic way, ideas and good opinion. In this way you can complete your class and make a good answer and send it to me at t.me/gsrevolt पे आप इसे भेज देंगे. I will check you and give you the desired feedback.
hoping to understanding this class. I believe that you got all the desired facts. Thank you and have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.